Okay, so there was once this girl who came to me. She was 20 years old and she had a lot of fear in her. So we were trying to find out कि what is it. So when I did her clearing, I found that इसमें कुछ कहते हैं जिसे होता है जैसे कि ट्रांसफर सोल्स होती हैं. ओके, जब आप पैदा हुए तो there was a soul in you and somehow the soul feels I cannot deal with this life. ठीक है, तो वो एक सोल ट्रांसफर होती है. ये एक टेक्निकल एसआरटी का पार्ट है इस हीलिंग और भी हीलिंग मोडालिटीज का पार्ट है. मतलब वो जहाँ पे वो सोल चली जाती है, एक और सोल आ जाती है, जैसे एक वो हो जाती है, वॉक इन सोल्स कहते हैं. बहुत, आई मीन इफ यू रीड अप ऑन दिस देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. So I just was going on clearing this person, but I just couldn't release her of that fear. So then I reached out to my teacher and she said that, you know, then we checked and we realized that just at the time of her birth, there was a transfer soul. So वो जो पहले soul थी, उसके भी imprints थे और ये नए के भी imprints थे. तो मैं नए का clearing करी जा रही थी, लेकिन मैंने पुराने को touch नहीं करा था. So then we went through that process. We connected to the old soul's energy also. We cleared those imprints and ठीक होके वो she moved on, like you know she really grew out of that fear or anxiety that she was feeling. मेरा दिमाग खुल गया. और मैंने कभी भी नहीं सुना. और आप इसकी पूरी बात सुनिए. After about 2-3 months उस लड़की की मदर मेरे पास आई कि you really helped my daughter but I'm very anxious. और मैं इतना पैनिक आ जाता है मेरे अंदर ना, मतलब मेरे को अंधेरे से डर लगता है ऐसे करके. She was like, you know, 40-50 year old woman. So when I did her clearing again, I went back to say 20 years back and I said, some trauma happened to you 20 years back where there was a lot of fear and that fear and that panic is still present, that creates this panic. You know what happens in life कि हम वो story भूल जाते हैं. एक बारी बचपन में मैं 2 साल की थी, 3 साल की थी, कहीं जा रही थी, कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, I'm just giving you an hypothetical situation. सो वो जो क्रैश का साउंड था ना, वो मेरे अंदर रह गया और मुझे पता था कि जब भी वो साउंड आता है तो कुछ डर आ जाता है, बिकॉज उस टाइम डर गया. एज आई ग्रो ऑन इन लाइफ वो इंसिडेंट मैं भूल गई, ठीक है, बिकॉज वी ग्रो आउट ऑफ इट. बट वो क्रैश का इम्प्रिंट या वो साउंड या वो नॉइज, 2 गाड़ियां क्लैश कर रही हैं, वो हमारे अंदर रह जाता है, ठीक है. सो कभी मैं टीवी में या पिक्चर में भी देख रही हूँ कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो वो क्रैश मेरे अंदर एक फियर. सी दैट्स द पास्ट वाइब्रेशन, ठीक है, पास्ट इन दिस लाइफ ओनली. ओके, सो गोइंग बैक टू दिस लेडी, व्हेन आई टोल्ड हर कि 20 इयर्स बैक कोई ट्रॉमा हुआ था जिससे कि वो फियर इम्प्रिंट आपके अंदर है. शी सेड हाँ, 20 years back when my daughter was born, it was very traumatic. तो मैंने बोला क्या हुआ था? Of course I had not told her कि आपकी daughter का transfer soul था. She said कि when I went into labor, the doctor who checked me, she said that the child is dead. So they immediately took me in for a cesarean. And when they opened up, the child was alive. It gives me goosebumps to be saying it even now. I am freaking out. And we've heard of these incidents, isn't it? ऐसी बहुत चीजें हैं. But this is my own personal experience with that family. And so that trauma got जब transfer हो रहा था, that was that moment when they thought that the child was not there. So there are so many things like that. Like in SRT, we have a lot of vows from the past. We have a lot of, say, contracts that we hold with our parents and other souls. There's a reason that you've chosen these parents. There's a reason that you have chosen this life to do this particular thing or to complete this. अब वो reason हमको नहीं, कोई नहीं समझा सकता. वो हम choose करते हैं या so हम एक universe का ही है ना part. हाँ. But it's like कि हम, when do we say, even अगर हम देखते हैं what is nirvana, what is when we reach that state where we don't want to come back into a human body. Why are we coming back into a human body? In a layman way it is कि हाँ, we want to accomplish this. अब मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, अब मैंने इतना कर दिया, अब नेक्स्ट लाइफ में मुझे कुछ और चाहिए, नेम फेम हो गया, मुझे एक वो से मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, एक संतुष्ट स्टेट में जाना है, यू नो. सो एवरी लाइफ टाइम वी आर काइंड ऑफ इनकार्नेटिंग टू ग्रो इनटू समथिंग मोर. कुछ करना हो, हाँ, बट पर्पस वो नहीं होता. पर्पस यही होता है, व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, इज नॉट पर्पस टू बी अ गुड मदर और अ गुड टीचर और अ गुड, यू नो, स्टूडेंट. The purpose here is really to understand that we are that love, we are that joy, you know, we are not just this physical body. That's really our growth. Otherwise, what happens when we are in these confined situations, then we are judging each other, we are, you know, so those are all those low vibrations. कि उसने ऐसे नहीं करा, उसको ऐसे करना चाहिए था, expectations, anxiety, all that leads to, say, dissatisfaction, disappointment, anxiety, all it comes from there only, na? But what is the underlying emotion? It is all fear. It all stems from fear. So going back to this aspect of SRT that I was telling you,
there are all this, like you were asking me, कि ये past से हम choose करते हैं या कोई और. So एक plan है which none of us really know. It's a universal plan, right? आज आप पूरे यूनिवर्स को देखो, आप पूरे वर्ल्ड को देखो, क्या कोई ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड इसको बना सकता है? जितना मर्जी साइंटिफिक हो जाए, जितना मर्जी टेक्नोलॉजिकल हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल. सो ऑब्वियसली देयर इज अ हायर यूनिवर्सल पावर व्हिच इज हैंडलिंग एवरीथिंग, isn't it? And the sooner we understand that we have been put into this role as a teacher, as a mother, with this person who's kind of making you feel that, I just cannot live with this person, or I just cannot do this. And that's the challenge that you feel you need to go through.